Hello students. Today's topic is close packing in crystalline solids. As we know that in solids the constituent particles are considered as hard spheres and they should be of identical size. The packing of these spheres takes place in such a way that they occupy the minimum available space, which is called packing fraction or percentage occupancy, and there is very minimum empty space. Those empty spaces are called voids and interstitial sites. In other words, the crystal should have a maximum density, means maximum available volume should be occupied. This is referred to as close packing. So in order to understand this close packing, it can be divided into three main parts. The first one is close packing in one dimensions. So there is only one way of arrangement of particles in one dimensions, and that is in the form of a row. These particles can be shown as follows. See here, this is one sphere, second sphere, third sphere, and so on. So particles are arranged in the form of a row, and each particle is in contact with other particle. So this type of arrangement is called close packing in one dimension. One more thing is here. So this is the row type arrangement. So second main point is here, and that is coordination number. Now what is coordination number? It is defined as the number of spheres या constituent particles which are in direct contact with a particular sphere, okay. Let me consider this is that particular sphere. So in contact with this sphere there are only two spheres, okay. So that's why in this case the coordination number is 2. Coordination number in one dimensional arrangement is 2. The second type of arrangement is close packing in two dimensions. Close packing in two dimensions. आप सभी को क्लियर होगा, आपने कभी एक अरेंजमेंट लड्डुओं की देखी होगी. तो हलवाई ने क्या किया होता है, एक ट्रे में लड्डुओं को डेकोरेट करके रखा होता है, अरेंज करके रखा होता है. तो वो पहले एक फर्स्ट रो बनाता है, उस रो के बाद वो लेयर्स की फॉर्मेशन शो करता है. नाउ हाउ दोज लेयर्स कैन बी शोन, देयर आर टू वेज. लेट मी शो देम. सो लेट दिस इज द फर्स्ट रो, स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो, लड्डू हैं ये फर्स्ट रो के, एंड these are the spheres of second row. So they are just placed below the spheres of first row, and the spheres of third row they are placed below the spheres of second layer, and spheres of fourth row are placed below the spheres of third row, okay. There is another way of rearrangement of arrangement. So this is the first row, and these are the spheres of second row. Now where they are placed? They are placed in the depressions of first row. Spheres of first row, which they form depressions. Those depressions are filled with these spheres, and so on. So you can see here carefully. So this type of arrangement is totally different from the first one, okay. ये है टू डिमेंशनल अरेंजमेंट. नाउ व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इन केस ऑफ फर्स्ट अरेंजमेंट दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग in which we got rows and columns. We have rows and columns. You can see here the spheres are arranged in the form of rows as well as columns. Second thing,
in contact with a particular sphere there are four other spheres. You can see here these four spheres whose center I am showing here, they are touching the central sphere, and if I join the centers of these spheres we will get a sphere. That's why it is called sphere close packing. Okay, and in this case coordination number is equal to 4 because there are four spheres which are in direct contact with a particular sphere. The second type of arrangement sorry is called hexagonal close packing. Hexagonal close packing. रिमेंबर वन थिंग, ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशनल है, हम एक 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी स्टडी करेंगे. सो इन दिस केस you can see here why it is called hexagonal and what is the coordination number. So let me choose this sphere. So there are 6 spheres which are in direct contact with this sphere. So that's why it is called hexagonal close packing, because the combination of because the joining of the centers of those spheres which are in contact with a particular sphere that forms a hexagon. That's why it is called hexagonal close packing, and in this case the coordination number is 6. Okay, so greater important point है ये, greater the coordination number, more compact is the close packing, is the close packing. So यहाँ से clearly we can see that जो hexagonal close packing है, hexagonal close packing is more compact than square close packing, packing. Okay, so I hope you will understand this in a easier way. So this is the hexagonal close packing in 2 dimension square close packing. ठीक है, 2 types of arrangements. Now the third category is close packing in 3 dimensions. Close packing in 3 dimensions. So 3 dimensional क्या है? So आपने हलवाई की ये ट्रे तो देख ली जिसमें लड्डू अरेंज किए हुए हैं. अब क्या करेगा वो, इन लड्डुओं के ऊपर लड्डू रख के ऊपर की तरफ को लेयर बनाएगा. सो इस एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनती जाएगी एंड सो ऑन. ठीक है, सो आई विल कॉपी द सेटिंग फ्रॉम हियर एंड विल पेस्ट हियर. दिस विल बी easier for us. These spheres we can draw again, no problem. Okay, so मैंने चूज की कौन सी की, मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग चूज नहीं की. I considered hexagonal close packing because this was more compact arrangement than square close packing. So that's why यहाँ पे आपको square close packing चूज करके दिखाई हुई है. अब इसमें जो बीच में स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, वेकेंट स्पेसेस जो आपको दिख रहे हैं, दोज आर कॉल्ड वॉइड्स. जो वेकेंट स्पेसेस हैं दे आर कॉल्ड वॉइड्स, और इंटरस्टिशियल साइट्स दे आर आल्सो रेफर टू एज इंटरस्टिशियल साइट्स. इन वॉइड्स के ऊपर हम नए स्फीयर्स को अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइड्स वी कैन सी हियर, लेट मी शो यू. सी हियर, so this is a type of one arrangement and this is another type of arrangement. इसमें ये 2 टाइप्स की अरेंजमेंट्स आपको इस पूरी अरेंजमेंट में नजर आ रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, कंसीडर दीज 3 स्फीयर्स 1, 2 and 3. सो दे आर रिप्रेजेंटिंग दिस फॉर्म. इस केस में जो वॉइड्स हैं उनकी शेप आप देख सकते हो, उसमें ऊपर की तरफ को टिप है. सो लेट दीज जो वॉइड्स हैं विच हैव टिप अपवर्ड, दे आर कंसिडर्ड एज वॉइड्स ए. दे आर वॉइड्स ए. हर जगह पे जहाँ जहाँ इनकी टिप ऊपर की तरफ को है, दोज आर वॉइड्स ए. सो दीज आर ए वॉइड्स. और जिनकी टिप्स नीचे की तरफ को है, यू कैन सी हियर, दोज वॉइड्स आर बी वॉइड्स. सो यहाँ पे जिनकी टिप नीचे की तरफ को है, दे आर वॉइड्स बी. सो आई रोट हियर वॉइड बी. सो दीज आर बी वॉइड्स.
अगेन ये जो नीचे की तरफ को इनको बी मैंने नाम दे दिया, और जो ऊपर की तरफ को voids A है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ voids इन दिस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो 2 डायमेंशन वाली चूज की है। नाउ वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज to form another layer above the spheres of this first layer. Now what is that possibility? Either we can place the new spheres above voids A or above voids B. So let I consider the filling of voids A. मैंने A के ऊपर स्फीयर्स रख दिए, ये देखो मैंने A के ऊपर स्फीयर्स अरेंज कर दिए। ये जो स्फीयर्स अब ग्रीन डॉट्स की फॉर्म में दिख रहे हैं, दीज आर द स्फीयर्स ऑफ सेकेंड लेयर एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे देन 1 here, 1 here, 1 here and 1 here, 1 here. So A voids are occupied. A voids are occupied. अभी भी आपको जो बीच में वाइट स्पेसेस दिख रहे हैं, those spaces are for voids B. See here, यहाँ पे मैंने A को ऑक्यूपाई करवा लिया, A को ऑक्यूपाई करवा लिया, A को ऑक्यूपाई करवा लिया, यहाँ पे भी A फिल कर दिया, यहाँ भी A फिल कर दिया। ओके, सो नाउ वी गॉट 2 लेयर्स, वी गॉट 2 लेयर्स। जो फर्स्ट थी ये ब्लू कलर की, दिस वाज फर्स्ट लेयर, दिस वाज फर्स्ट लेयर। ओके, और जो ऊपर ग्रीन कलर में बन रही है, जो ग्रीन कलर की बनी है वो है सेकेंड लेयर, दैट इज सेकेंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर को मैंने A कह दिया और सेकेंड लेयर को मैंने B नाम दे दिया। वी हैव अरेंज्ड 2 लेयर्स। नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थर्ड लेयर? ओके, so just we can see here, when we are arranging these green spheres of a second layer, consider this portion, we can have this type of arrangement। यहाँ पे आप ये 3 स्फीयर्स को कंसिडर कर सकते हो, 1 2 3। यहाँ पे बीच में एक और void बन रहा है, ठीक है, दिस इज अगेन अ न्यू void। बना कि नहीं बना? दिस इज अगेन अ न्यू void, or if can be seen carefully, then this is just above the sphere of layer A, sphere of layer A layer के स्फीयर के एग्जैक्टली ऊपर है। जो ये void C नया यहाँ पे बना है सेकेंड लेयर का, एग्जैक्टली इसके बिलो क्या है? स्फीयर ऑफ लेयर A. So when we can place the sphere of a third layer just above the new void which is formed from second layer, we will have an arrangement in which the spheres of the third layer are just above the spheres of first layer. So फिर से आपको शो कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट लेयर का स्फीयर था नीचे, एग्जैक्टली यू कैन सी हियर, ये फर्स्ट स्फीयर था ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे ये सेकंड स्फीयर था, तो एग्जैक्टली इसी के ऊपर अब थर्ड लेयर का स्फीयर आ गया। देन नेक्स्ट वन, देन नेक्स्ट वन, देन अगेन नेक्स्ट वन। सो वी ऑक्युपाइड द स्फीयर्स, देन दिस इज अनदर वे। सो ये जो रेड कलर में आपको यहाँ पे शो की गई है, दिस इज थर्ड लेयर, दिस इज थर्ड लेयर, बट दिस इज नॉट अ न्यू लेयर। This layer is just above the spheres of A layers, A layer. So this arrangement is basically A, B, A, B, A, B and so on. This pattern is followed. So when this type of pattern is formed, it is called hexagonal close packing in 3 dimensions. In 3 dimensions. This is very important. Hexagonal close packing in 3 dimensions. So AB, AB, AB and so on, means spheres of first layer are just above the spheres of second layer. This can be shown in the form of a diagram also. So let me draw this one. So hexagonal इसको नाम दिया है, so I will draw a hexagon here. So it is taking a bit time, no problem. So this is one hexagon. मैंने इसको थोड़ा सा tilted बनाया है so that it will be easier for us in the next step. So I will copy this one.
and this is the second part of this one. So if we have these spheres at the corners of this hexagon, 1 2 3 4 5 6 and so on, 1 2 3 4 5 and 6. So you can clearly see the spheres. This is exactly above this sphere, this is exactly above this sphere, this one exactly above this one, ये और ये. So this was the layer A, this was layer A, again A के ऊपर exactly A. Now where are the spheres? B spheres means spheres of second layer are between these two layers. So this is sphere 1 2 3, these are the three spheres for layer B. So this is hexagonal close packing. In this way we will have a type of arrangement which is called hexagonal close packing in 3 dimensions. Okay, in this case coordination number is equal to 12. Coordination number is equal to 12. So this is very high as compared to जो हम 2 dimensions में study कर रहे हैं. So it is always better to form layers above layers for compact packing. So this is one of the type. कौन सी थी 3 dimensional close packing की? It is HCP, hexagonal close packing. Now the second one is which is called cubic close packing. 1 2 3 and so on, a row is formed, and for hexagonal these spheres are placed in the depressions of spheres of first row and so on. Okay, so for second layer what we did last time, we occupied the spheres of second layer above the voids A जिनकी टिप ऊपर की तरफ को थी. तो मैंने ये ऊपर की तरफ को यहाँ पे शो कर दिए, बना दिए. ये भी ऊपर वाली टिप थी तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे ये आ गया. दिस इज द नेक्स्ट वन, दिस इज नेक्स्ट वन. तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है बीच में जो वाइट स्पेसेस नजर आ रहे हैं, दीज आर दी वॉइड्स जो पहले वी वॉइड थे. ए को तो हमने ऑक्यूपाई कर लिया. नो, वी वॉइड्स आर रिमेनिंग अनऑक्यूपाइड, स्टिल दे आर अनऑक्यूपाइड, वी कैन सी देम. ओके, सो वी गॉट नाउ 2 layers. This was the first layer which is called A, green layer which is called layer B. Now if we placed sphere of third layer at this point, so we will get a sphere exactly above the sphere of first row जो हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं. that is called hexagonal close packing. Now we will occupy those voids जो exactly B के ऊपर बन रहे थे. You can see now this one, this is the third layer, and below this layer no sphere of second or first layer is present. So this is a totally new type of layer. So this layer is now layer C. This layer is layer C. This is C layer. So we have 3 layers now placed one above another. A, B, C, A, B, C, A, B, C. And if this type of pattern is observed in close packing, this is called cubic close packing in 3 dimensions. Cubic close packing in 3 dimensions. And in this case also the coordination number is 12. Coordination number is 12. So we have 12 coordination number in this case. Means cubic close packing CCP and hexagonal close packing both have same packing fraction. Packing fraction means the space which is occupied, total space का जितना भी occupied है वो same है. ठीक है. So how this CCP arrangement can be shown? So we can have this type of arrangement.
So this is a type of जो CCP arrangement है. This is exactly similar to what we have studied in earlier topics, and that was FCC, face centered. So I will show you how this is face centered arrangement. So for CCP arrangement, see here. So I will change the color of these spheres a little bit so that it will be better clear for us. So let first of all, this is the sphere A. Again, this is sphere A. For B spheres, I am using the color red. 1, 2, 3, 4, 5. ये सामने वाली फेस आ गई. And for the spheres of next layer, this is the black color. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ओके, सो जो ये हमारे पास है, दिस इज लेयर ए. दीज रेड डॉट्स, रेड स्फीयर्स आर रिप्रेजेंटिंग लेयर बी. above this black dots, they are representing C, and exactly we have again layer A. So this is ABC type arrangement. So we can compare this arrangement because this is similar to FCC. Now what is FCC arrangement? I will show you in a just way here. See here, FCC arrangement. So this is a cube, this will be a cube. Just wait. So the cube is drawn here, and in this cube you can now see if these are the spheres of A layer, ये A आ गई, और एग्जैक्टली इसके अपोजिट पीछे वाली जो है वो A आ गई. B कहाँ प्रेजेंट है? B के लिए we have considered red dots. So you can see here, this is 1 point, this is second, third, fourth, ठीक है, फिफ्थ वन, और ये आगे वाली फेस सेंटर. देन वी हैव ब्लैक डॉट्स, ब्लैक स्फीयर्स है एक्चुअली ये. सो दिस इज 1 पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, दिस फेस, center of this face, and this one. So this is similar to this one. We have just tilted the geometry of this one. एक एंगल वे में इसको घुमा दिया, एक सीधी बड़ी है, एक को हमने चेंज कर दिया. सो दिस इज FCC type arrangement which we have studied earlier. So remember one thing, CCP is equal to FCC. CCP arrangement is exactly equal to FCC arrangement. So this is all about for the close packing in solids. It is basically three types: one dimensional, two dimensional, and three dimensional. One dimensional is simple row type arrangement. Two dimensional is further of two types: square close packing and hexagonal close packing. And in three dimensions we have studied two types of arrangements: hexagonal close packing and CCP. In both the cases coordination number is 12, and this CCP arrangement is actually equivalent to FCC arrangement. ठीक है, okay, thank you.